मैडम ने मुझे ये बताया कि बच्चों ने कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिएगा, तो मैडम ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया। चलें, अब जो भी रीज़न है, जो भी हुआ, जो हो गया सो हो गया, अब आप उसको कवर कर दें। तो मैडम आपसे सीआर से कांटेक्ट करके वो आप लोग पढ़ा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, स्टैट्स की बुक्स हैं, और आप आगे जब प्रोफेशनल, इतना ज़्यादा फील नहीं होगा प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन उसके फाउंडेशन जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होते हैं। ओके, so in first semester you have studied how to calculate variance when you are given summation x square and summation x. So you can use this information to calculate the mean value lambda and also to calculate the variance which is lambda as well. अगर आप इसके जरिए से देखें, summation x 295 divided by 80. So lambda equals 2.5 divided by 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 7, 5. So this is lambda value. Now calculate the mean, which is also the variance. Are you getting it? Mean और variance तो बराबर होता है ना इसके अंदर Poisson distribution में. So mean equals to lambda is equal to variance. So it is easy. Give your answer to two decimal places. So that means that's it. मैंने आपको ये करके दिखाया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था. And explain how the answer from part A support the choice of a Poisson distribution as a model. Why? हम क्यों Poisson distribution यूज करें? आप देखिए ना, n is very large. A botanist counts the number of daisies x. तो daisy flower जो है ये है. और in each of 80 randomly selected squares. अब कितने हैं स्क्वायर्स हैं? 80. n is large. तो इस वजह से हमने क्या कर दिया कि n is large, so हम यहाँ पे Poisson distribution यूज कर रहे हैं, not the binomial. तो ये आप यहाँ पे ये रीजन दे सकते हैं. The reason to use binomial Poisson distribution is that n is large, number of trials is large, so that's why we have to go with Poisson distribution. And suitable value of lambda, suppose this is suitable value of lambda, estimate the probability exactly 3 is found in a randomly selected square. Okay, yeah, this is different. 80 में तो आपके पास एवरेज इतना है ना, तो एक में कितना होगा? ऑन 1 किलोमीटर 3.69 है, तो हम 3.69 यूज करते हुए, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3.69 यूज करेंगे और पार्ट सी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, डैफोडिल्स होते हैं, रेजिस होते हैं, बहुत वैरायटी है. इवन रेपसीड ऑयल का जो हमारे पाकिस्तान में भी जो वेजिटेबल ऑयल के नाम से सेल होता है, रेपसीड ऑयल भी बाहर से मंगाया जाता है, बहुत ही कॉमन है वहाँ पे. वहाँ पे ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ ग्रास बन जाती है, खुद ही जाती है, वैसे वहाँ पे रेपसीड ऑयल होता है, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोपियन कंट्रीज, और हमारे जो है उसको काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर सेल करते हैं. ओके, this is a new concept I just added last week. It is showing how you can add two Poisson distribution. Poisson distribution में एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक Poisson distribution है और दूसरी भी एक और another probability distribution है, हम उनको simply add कर सकते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल रखी. What is that mean? Suppose that we had two fair three-sided spinners, spin करने वाले 1 2, each which could be represented using random variables x and y respectively. Then z is equal to x plus y would represent the distribution of adding each possible outcome from x first spinner and each possible outcome from y second spinner. अब ये देखें, फर्स्ट स्पिनर के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है और सेकेंड स्पिनर के ऊपर 2 3 4 लिखा हुआ है. सो नंबर्स का ऐड करें 1 + 2
1 plus 3 is 4, 1 plus 4 is 5. So this is called a joint distribution, जिसमें से यहाँ पर ये x स्पिनर आ गया और यहाँ पर ये y स्पिनर आ गया. And if we want to make it univariate distribution, one variable distribution, आप देखें how many different ways we have where the sum can be 3. There is only one way out of total 9 ways where sum is equal to 3. So it is 1/9. Second thing, 4, sum equals 4. So I can see 4 is here, sum equals to 4 is here, sum equals to 4 is here. 2 possibilities out of 9 total possibilities where the sum 4 can appear, and so on. So this is the distribution for the sum of numbers on the two spinners. ये क्या एग्जाम्पल बताइए, ये एग्जाम्पल बताइए कैसे दो वेरिएबल्स को हम ऐड कर सकते हैं. यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए, जो हमारा टॉपिक है. सपोज x फॉलोज PO मींस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ये उसका फॉर्मल नोटेशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. x represents Poisson distribution with parameter lambda1 and y represents the Poisson distribution with parameter lambda2. एग्जाम्पल बड़ी इजी हो सकती है, जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो कराची यूनिवर्सिटी एंटर होते हैं सुबह के टाइम में, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं आफ्टरनून टाइम के अंदर. तो हम टोटल अगर निकालना चाहें कि भाई सुबह से लेकर आफ्टरनून तक कितने लोग कराची यूनिवर्सिटी में एंटर हुए, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके प्रोबेबिलिटीज या जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको प्रोक्योरमेंट आसान होती है और आपको स्टाफिंग, कितने स्टाफ अप्लाई करने हैं, कितना कैमरे अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज़ें ईजी. इसलिए प्लानिंग के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सर्विस सिस्टम के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, या कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो, कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन हो जिसके अंदर आपको प्लानिंग करना पड़े, वहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लेते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटीज के ज़रिए से एस्टिमेट करा जाता है कि भाई अगर हम ऐसा एक्शन लेंगे तो क्या होगा, एक्शन ए करेंगे तो क्या होगा, एक्शन बी करेंगे तो क्या होगा. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन एट द मोमेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इसको समझना है और अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है. So for example, x follows Poisson distribution with 3.6 mean value, and y is a Poisson distribution with mean value 4.4. If I add them, 3 plus 4 is 7, 6 plus 4 is 10. So it is the lambda, for the combined lambda, lambda 1 plus lambda 2 will be 10, will be 8. So I can calculate this probability of x equals to 7. और मैं क्या करूँगा, lambda power x cert. So here I will say probability of x plus y equals 7. We can edit from the probability x plus y equals 7 equals lambda power x, lambda power lambda is 8, lambda power x, and then here e to the power minus lambda divided by x factorial. So if I solve this equation, then I can find the probability cross line. If I solve using calculator, I can find this probability. Otherwise, you can use the Poisson table to calculate this probability. So it will be even easier if you use that one. सॉरी फॉर्मेटिंग खराब हो रही है इसकी, लेकिन यह है कि ये इस तरीके से आप जो है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके देख सकते हैं. And similarly, you can solve for x plus y less than equal to 5 using table or using this. इसी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. Okay. You will try solving these exercises. And last thing for the lecture side is Poisson and binomial.
Okay, so this is approximation when n is large, p is very small, then x is approximated by Poisson distribution, where lambda, we use lambda equals to np. तो ये चेंज आ जाता है, ये लैम्डा की जगह np यूज कर लेते हैं, या nt की जगह हम लैम्डा यूज। Generally, if n times p is less than 10, less than equal to 10, then try to use Poisson distribution in place of binomial distribution. So we say binomial distribution is converted into Poisson distribution using, this is the way to convert from here to. Reason क्या है? अगर n is large, calculating n factorial is really a problem. इसके लिए हमने जब MSc में थे तो हमने पढ़ा था विलियम फेलर की बुक में, स्पेसिफिक नेम था उस फार्मूले का, वो फार्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे 3000 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर में तो मेमोरी एरर आ जाएगा, लेकिन अगर आप वो फार्मूला यूज करेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते। 3000, 10,000 का फैक्टोरियल, वो सारे स्टर्लिंग फार्मूला, सो दैट्स स्टर्लिंग्स फार्मूला टू यूज फैक्टोरियल फॉर वेरी लार्ज नंबर। हम यहाँ पे स्टर्लिंग्स फार्मूला नहीं यूज कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस ऑफ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, suppose if x follows binomial distribution, then what will happen? It will become Poisson distribution. Copy this. It will become Poisson distribution, and lambda, type again. Typing, I'm taking. Lambda is equal to 100 times 0.01, 0.1 कितना होता है? 100 times 10. Yeah, lambda equals to 10. So आप देखें कि it is very easy to do this. Simply just multiply these two numbers, 10 times 100 times 0.1, 50 times 0.5 to get this answer. So just for practice. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिए। Okay. So this is one question, simple question. You are performing a cohort study. Cohort माने होते हैं जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स एनरोल किए जाते हैं और वो किसी डिजीज के लिए या किसी इंजीनियरिंग या किसी फिजिकल साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। If the probability of developing disease in the exposed group is 0.05 for the study duration, then if you randomly sample 500, so 500 is n, it's a big number, and the probability is 0.05 for the exposed group. Exposed group माने जैसे जब एनिमल्स पे रिसर्च होती है तो कुछ एनिमल्स को खुद ही वायरस या बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनको देखा जाए कि उनका बिहेवियर कैसे होगा। जैसे कैंसर सेल रिसर्च होती है माउस के ऊपर, चूहों के ऊपर, तो कैंसर सेल्स जो हैं चूहों के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर उसकी स्टडी की जाती है। या चिकन जो हम खाते हैं उसमें एक सेलोमेनिया कुछ नाम का डिजीज होता है, तो उसका जो वायरस है वो इंजेक्ट करके फिर ऑब्जर्वेशन की जाती है कि क्या होगा, ताकि ह्यूमन से पहले एनिमल रिसर्च हो जाए। So we suppose we have 500 exposed subjects or animals or people, and the probability of being in the exposed group is only 5%. How many do you expect to develop the disease? अगर किसी के अंदर symptoms है तो वो disease develop करेगा या नहीं करेगा? You can find this margin with plus minus 1 standard deviation. आपने पढ़ा कि Poisson distribution का जो standard deviation है वो square root of lambda हो जाएगा, ये lambda variance होता है। So binomial x follows x follows binomial distribution with n equals to 500, p equals 0.05. So mean value will be 500 times 0.05, giving you 25, and variance will be 23.75, a very big value for the variance. Asuran, 25 ही होना चाहिए था, लेकिन जो कि ये approximation है इसलिए ये
दोनों इक्वल नहीं आ रहे, वरना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता तो दोनों की वैल्यू लैम्डा लैम्डा काउंट होती। इसका स्क्वायर रूट लिया 23.75, स्क्वायर रूट इज 4.7 विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। So mean plus minus 1 standard deviation is the required range of values. यानी जो मेडिकल साइंस रिसर्च होती है उसमें मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं। इसको क्वालिटी कंट्रोल में भी चेक करते हैं ऐसे। ओके, एनीवे, so you will try to solve the second question, which is easier one, binomial formula or binomial table. These are few examples which might be helpful for exam preparation. They are a bit not difficult. No, they are simple. Just practice. मैंने किसी और वेबसाइट से लिए, इसलिए इनके मार्क्स भी इसके साथ लिखे हुए 3, 3, 2, 3. This is for practice. हाँ, in terms of books, there are 2 पाकिस्तानी books. Local books को भी promote करना बहुत ज़रूरी होता है. सर शेर मोहम्मद चौधरी लेट शाहिद कमाल साहब जो हैं, इनकी बुक है स्टैटिस्टिकल थ्योरी. ये बहुत अच्छी बुक्स हैं. आई डोंट नो कराची में उर्दू बाजार में मिल जाएंगी, तो मिलती हैं तो ये अच्छा रखते हैं. और आज के स्लाइड के लिए मैंने ये थोड़ी स्लाइड्स से ही ली थी कॉलेज, और कुछ मेरे पुराने लिखे. ओके, एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? देन वी विल हैव शॉर्ट ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल. किसी ने का क्वेश्चन है तो बता दीजिए. आई डोंट नो, अब ये जो अटेंडेंस का इशू है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाहर तो भाई हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, लिखा हुआ होता है कि भाई ये करेंगे, इसका ये बेनिफिट है और ये पनिशमेंट है. तो रूल सेट कर लें और उसको फॉलो करें. अगर किसी के घर में कोई बीमार है उसका दे दीजिए, अगर कोई खुद बीमार है तो खुद दे दीजिए. इसकी कमेटी बनती है डिपार्टमेंटल वाइज, स्टूडेंट एडवाइजर के थ्रू फरहान साहब के थ्रू बनेगी. तो कोशिश करें कि एब्सेंट नहीं हो, ये आपका अपना नुकसान भी. मेरा तो मैं तो आपको बताता जा रहा हूँ, प्रिंसिपल मेरे बड़े सिंपल, वहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता बाहर की दुनिया में. तो जो भी करें आप फेयरली करें. आप किसी रीज़न की वजह से एब्सेंट हैं तो वो रीज़न प्रेजेंट करें, और या फिर जो है वो तैयार होकर आए, हम कुछ क्वेश्चंस कर सकें. ओके, सी यू आफ्टर 8 मिनट. 11:20 पे दोबारा मिलते. हम फिर आर स्टार्ट करें, फंडामेंटल्स ऑफ आर लैंग्वेज. थैंक यू.